I am sure you have been studying and you have been following my episodes of on the TV, but I find that there's quite a substantial lack of views that I'm getting. So perhaps your exams are going on, you don't have enough time to look over my videos, but I would also insist that you should promote subscribers. The more the subscribers are, the more encouragement I get and the better videos I make. Is that clear? So today we are doing conjunctions. Because conjunctions requires a lot of explaining. I have tried to write all the conjunctions here. They're not all, please. This is just the first paragraph. So this is, if you want to note, if you want to record, please note down, stop the video, record it, write it down, because this is all very important. Every word of it is important. I'm going to explain it to you. Undoubtedly, I'm going to explain it to you. But what you need to know that you have the text with you. Is that right? So, conjunctions are of various types. Remember that. But also remember that very rarely do the papers require, or the examination papers I meant, require you to use particular subordinating conjunctions. Join these sentences with correlative conjunctions. That is very rare. Normally you get join these sentences without using and, so, but, because, whatever. So what you need to do is understand what conjunctions are. You don't have to learn them by heart. Just have an idea. I have to write coordinating conjunctions, alternative conjunctions. I have to write this. I have to tell it to you because you never know what comes in the examination. You need to be prepared. But you need to lay more stress on how to use. Another thing is here that I have circled the word clauses. After I finish with teaching you with these conjunctions, I am going to tell you what clauses are and how they function. Is that right? So, conjunctions are of various types. Coordinating conjunctions are conjunctions. Coordinating conjunctions are of four types. So, you see that coordinating conjunctions itself are of four types. First of all is the iliative conjunction. They express an inference. Now, what do you understand by inference? Inference is when you understand something is not told to you, but you infer its meaning. Suppose a man is standing beside a shiny new BMW and he's twirling some keys around his finger. So, what inference do you take out of that? That the man is rich, the BMW belongs to him. It might not. He might just be standing there, waiting for somebody. But what you need to know is that is the inference you draw, that this man is rich, he owns a BMW. Right? Now, they express an inference. She did not study, so she failed. Now, why did she fail? Because she did not study. So that's again an inference. Alternative conjunctions are also called disjunctive. See, now you have so many types of conjunctions. This is alternative conjunction. Then the same is called the disjunctive conjunction. They are the same. They express a choice between two alternatives. Either take this pen or take that pen. So it is giving you a choice. They express a choice between two alternatives. Then we come to adversative conjunctions. Now, adversative conjunctions express contradiction. Do you understand the meaning of contradiction? Contradiction is that something is good and the other thing is bad. She is beautiful but vain. So, beautiful is a good quality, but vanity is bad. So, that's a contradiction. That expresses a contradiction. Now, this is again, you have understood this, cumulative conjunctions. Cumulative conjunctions
are also known as correlative conjunctions. So you understand there are such a lot of variety of conjunctions, and they are not considered of great importance. Their categories are not considered of great importance until and unless you are sitting for a CAT or a MAT examination. There you definitely want to know what is a correlative and what is a cumulative conjunction, right? देखिए अब यहां तक जो कुछ आपने अभी तक करा है उसमें मैंने आपको ये बताया है कि कितनी तरह के कंजंक्शंस हैं, अलग अलग तरह के कंजंक्शंस हैं, एक ही कंजंक्शन के दो दो नाम हैं, तो उनको आपको समझना है, उनको याद रखना है। ये ऑल्टरनेटिव कंजंक्शन इज आल्सो कॉल्ड अ डिसजंक्टिव कंजंक्शन, cumulative conjunction is also called a correlative conjunction. So एक ही तरह के conjunctions के दो तीन जगह के तरह के नाम हैं। इनको अलग अलग बुक्स अलग अलग तरह के नाम देती हैं और नाम्स देती है, मतलब नाम देती है, सॉरी। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ये आपके दिमाग में बैठ जाए कि भाई ये इस तरह का कंजंक्शन होता है। ऑल्टरनेटिव कंजंक्शन क्या होता है, वो एक चॉइस बताता है, ये ले लो, ये वो ले लो। तो दैट इज द डिफरेंस है। नाउ कोरिलेटिव कंजंक्शंस मैंने अभी बताया, दे आर यूज्ड इन पेयर्स। Neither Ram stole the watch nor Rahim stole it. तो इसका मतलब ना ये ना वो, या ये या वो। So these are correlative conjunctions. I'll give you lots of examples. Don't worry. I'll give you. This is only the definitions that you need to know. आपको ये मैं अभी सिर्फ डेफिनेशन बता रहा हूं, उसके बाद मैं आपको स्पेसिफिक वर्ड्स बताऊंगा कि कौन सा कंजंक्शन कहां पे यूज करना चाहिए और कहां पे यूज नहीं करना चाहिए, उसके बाद कौन सा पंक्चुएशन मार्क लगेगा और कौन सा पंक्चुएशन मार्क नहीं लगेगा। तो ये सारी बातें भी आपको समझाई जाएंगी। सो डोंट हैव वरीज इन योर माइंड। नाउ यहां तक हमने आ गए। नाउ वी कम टू सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। Now, subordinating conjunctions join clauses to another clause. Now, clauses के बारे में आपको मुझे बताना है। मैं ये करने के बाद आपको clauses बताऊंगा। बेसिकली clauses क्या होते हैं, उसमें various types of words होते हैं, various types of clauses होते हैं। एक ही clause के दो दो तीन तीन नाम होते हैं। तो मैं आपको वो सारी चीजें समझाऊंगा। As soon as we finish with conjunctions, I'll tell you about the clauses. So just for a while, थोड़ी देर के लिए बर्दाश्त कीजिएगा, मेरे साथ रहिए, ध्यान रखिएगा clauses का मतलब अभी आपको पता चलेगा। Is that right? Okay. Join clauses to another clause on which its full meaning depends. Now another clause on which its full meaning depends, यानी कि दो क्लॉज हैं, एक का मीनिंग एक के ऊपर आता है, तो वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। Some such words are, अब जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस यूज होते हैं उनके लिए कुछ शब्द क्या क्या है, then, after, because, that, if, though, although, till, before, unless, as, when, where, why, since, etc. Now, this is not the complete list. I cannot give you the complete list of all the conjunctions. वो दे ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि इसमें और भी कंजंक्शंस हैं। नाउ इसमें एक छोटी सी चीज एडिशन है जो बच्चों की सहूलियत के लिए है, बेसिकली जो बच्चों की सहूलियत के लिए, बेसिकली सहूलियत के लिए ये है, जैसे when, where, while, since, etc. They are also known as wabbits. Now wabbits ऐसे ही इनका नाम लिखा गया है क्योंकि W से A से स्टार्ट होते हैं। एक्रोनिम नहीं है, समझ लीजिएगा, एक्रोनिम नहीं है। एक्रोनिम क्या होता है पहले ये बता दूं मैं आपको। देखो एक्रोनिम ये होता है जैसे WHO, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। नाउ W इसका, H इसका, O इसका, ये बन गया WHO। तो WHO becomes an acronym of World Health Organization, जो अल्फाबेट्स लेके लेते हैं। तो मैं ये बता रहा हूं कि ये एक्रोनिम नहीं है। We'll come to fan boys, मैं अभी आपको fan boys के बारे में भी पढ़ाऊंगा, और वो fan boys is an acronym, right? ये सब कंजंक्शंस में ही आएंगे आपके लिए। और एक बात और ध्यान रखिएगा,
ये वैबिट्स एंड फैन बॉयज जो मैं आपको बता रहा हूं, ये लेटेस्ट क्रिएशन है। पुरानी किताबें अगर आप पढ़ेंगे, रेन एंड मॉर्टन, द बेस्ट, द बाइबल, कंसिडर्ड टू बी द बाइबल फॉर इंग्लिश लैंग्वेज, उसमें आप कहीं नहीं पाएंगे वैबिट्स और फैन बॉयज की बात। ये तो आजकल के बच्चों की सहूलियत के लिए ये चीजें बना दी गई हैं और कुछ भी नहीं। ठीक है। अब when a wabbit begins a sentence, अब इस बात का ध्यान रखिए, ये wabbits क्या हुए, ये सारे वर्ड्स आपको पता है, सारे वर्ड्स wabbits है। when, where, while, how, all these are wabbits. When a wabbit begins a sentence, comma is always placed before the main clause. तो प्लीज याद रखिएगा, a comma is always placed before the main clause. Wabbit अगर सेंटेंस बिगिन करता है, wabbit begins a sentence, तो मेन क्लॉज के बाद वो आना चाहिए। उसके बाद but if the wabbit is placed in the middle of the sentence, then comma is not used. Now मैं थोड़ी सी देर के लिए, अभी आपने, मैं उम्मीद करता हूं कि आपने सब कुछ नोट कर लिया होगा। मैं थोड़ी सी देर के लिए ये इतना सा पोर्शन, थोड़ा सा पोर्शन ड्रॉप करता हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्लॉजेस क्या है, उसके बाद वील टेक ओवर। नाउ वी आर कमिंग टू क्लॉजेस। सी देखिए, कंजंक्शंस का क्लॉजेस से कोई मतलब नहीं है, क्लॉजेस, फ्रेजेस वगैरह, इट्स अनदर चैप्टर ऑल टुगेदर। बट मैं यहां पे थोड़ा सा आपको दे रहा हूं, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। इट इज नॉट कंप्लीट इंफॉर्मेशन बट सम इंफॉर्मेशन, सो दैट यू नो। सी, फ्रेज इज अ ग्रुप of words without a verb. See, remember, without a verb, it conveys some meaning. Remember, I say some meaning. I'm not saying complete meaning. This is some meaning. Like you say, okay, good night. So all these good night, then there'll be so many other words which will be used as phrases. So you have some phrases here. Now, clause is a group of words with a verb. Remember, with a verb. It conveys meaning. It can also be a simple sentence. एग्जाम्पल के तौर पे लीजिए, see you tomorrow. See you tomorrow. Must rush now. Now, all these words these are clauses. Now, remember that with a verb and it conveys meaning. This also conveys meaning, but it conveys some meaning. Now, ये बताने के बाद I'll tell you what exactly are clauses. अभी तो मैंने आपको phrases और clauses में फर्क बताया। अब मैं clauses के different types बताता हूं मैं आपको।
Now, clauses जो मैं आपको बता रहा था, clauses are of various types. First is main clause. This is also called the principal clause or independent clause. So now, main clause, independent clause, principal clause, these are all one clause or of the same type. They do not depend on any other clause to give their meaning. They can be a complete sentence in itself. Okay, I shall go to Shimla. Shimla next week. Okay, I shall go to Shimla next week. Simple basic बात है. अब ये है मेन क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज. इसके साथ हम सब नेक्स्ट होता है subordinate or dependent clause, right? डिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है? if it does not rain when Ramesh phones. Now ये दो मैंने आपको, एक और ये दो, ये मैंने सबऑर्डिनेट क्लॉज लिख दिए हैं. अब ये सबऑर्डिनेट क्लॉज इस मेन क्लॉज के साथ जाते हैं. ये आपस में मीनिंग तो देते हैं लेकिन कंप्लीट मीनिंग नहीं देते. I shall go to Shimla next week when Ramesh calls. So when Ramesh calls is adding meaning to the main clause. It is not dependent by itself. It cannot convey a meaning. If it does not rain, I shall go to Shimla next week. So he is talking, if is a dependent clause, it depends on, its meaning is dependent on the main clause. It helps the main clause. I presume that is more than enough for clauses. You will get to know what are subordinate clauses and what are main clauses, right? Okay, now we have done with clauses, but there's lots and lots remaining about conjunctions. So, and the time is almost 25 minutes now. So I believe we should end this class episode here. We'll take up the details of conjunctions in our next video. Thank you.